Hello everyone, welcome to our channel that is Commerce and Management Hub with SK. Our today's topic of discussion is entrepreneurship. The success of any developed and developing countries depends upon its economic development, and in the modern competitive age, it is very difficult task to start a business because of high risk and uncertainties. सो एंटरप्रेन्योरशिप की एब्सेंस में बिजनेसमैन एक प्रॉपर मैनर में बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। तो सवाल आता है कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। An entrepreneur is that person who makes an effort to bring change in environment of the country and society as well on the basis of his ability and skills. In simple words, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल को कलेक्ट करेगा, असेंबल करेगा और प्रोड्यूस न्यू गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड ऑफ कंज्यूमर्स. He avails the new opportunities present in the environment and makes such tasks possible by his activities regarding which the common man cannot even think about. So basically, entrepreneur is a person who grabs the opportunity and tries to exploit it by introducing a new product, a new method of production, a new market, a new source of raw material, or a new combination of factor of production. On the other hand, entrepreneurship is basically the process of doing all the function, that is searching investment and production opportunities, organizing an enterprise to undertake a new production process, raising capital, hiring labor, arrangement for supply of raw material, and selecting top managers for day-to-day operation of the enterprise. Now let us try to understand the characteristics or nature of entrepreneurship. Come to the first point, that is economic activity, as it involves the establishment and operation of a business, and all the economic decisions related to resources of business are also taken under it. The selection of the best opportunity among the profitable opportunities of earning maximum profit is also a part of entrepreneurship. So ये simplest form है और entrepreneurship continuous economic activity है जो accept करती है changes according to time. Next point is innovative activity. किस तरह से innovative? New products, services and ideas are created, new techniques of production are developed, new markets are searched out for sale of products as well as services, and new method of demand and supply are found out. It means that an entrepreneur works for creating something new by making use of existing resources under entrepreneurship. Move to the next point, that is systematic activity. It has been defined as a systematic activity because various steps like idea generation, preparation, clarification, analysis, verification, etc. have to be followed in its completion, and the completion of its every step requires special knowledge as well as experience. So we can say it is systematic activity. The next point is objective oriented, as its main objective is to identify the need of providing product value to customers, return to investors and profit to entrepreneurs. एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के थ्रू एक एंटरप्रेन्योर ऑब्जेक्टिव जो है आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह से कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल किया जाए, रिटर्न किस तरह से मिलेगा इन्वेस्टर्स को, कितना मिलेगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा एक एंटरप्रेन्योर को. So, entrepreneurship is an objective oriented. Move to the next point, that is creativity. As it is clear from its name, a new task or making the existence of something new. Under entrepreneurship, an effort is made to do something new. जैसे कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, न्यू टेक्निक्स होंगी, न्यू प्रोसेसेस होंगे, in order to attain the objective of minimum cost and maximum profits.
मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क और अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ेगी बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड फुल ऑफ रिस्क। These risk and uncertainty can be reduced by proper control, but these cannot be abolished completely. Move to the next point that is establishment related process. Entrepreneurship process के अंदर एक analysis होता है, various component को study किया जाता है, like business environment होगा, financial source, रिसोर्सेज कौन से होंगे, क्या टेक्निक्स होगी, क्या प्रोडक्शन लेवल होगा, कहाँ से मटेरियल आएगा, कौन से कॉम्बिनेशन यूज़ होंगे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू बिजनेस सो दैट नो ऑब्स्टेकल इज experienced in the establishment of business. So it is establishment related process. This is all about its characteristics. एक बार रिपीट करते हैं पॉइंट्स. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें अपने बिजनेस से. इनोवेटिव एक्टिविटी, न्यू प्रोडक्ट सर्विस आइडियाज़, न्यू टेक्निक्स होंगी, न्यू मार्केट होगी, न्यू डिमांड एंड सप्लाई के मेथड्स होंगे और एंटरप्रेन्योर वर्क करेगा फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू बाय मेकिंग यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अंडर एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक एक्टिविटी की आइडिया जनरेशन से लेकर एनालिसिस तक सब कुछ इसी के अंदर होगा एंटरप्रेन्योरशिप में. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, इसमें कस्टमर की वैल्यू को देखेंगे, उसकी नीड्स को देखेंगे और फुलफिल करेंगे. रिटर्न टू इन्वेस्टर्स और प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर्स. सो इट इज़ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी की जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एन एफर्ट इज़ मेड टू डू समथिंग न्यू. नेक्स्ट इज़ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ेगा रिस्क और अनसर्टेनिटी बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन. लास्ट इज एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड प्रोसेस. वेरियस कंपोनेंट को स्टडी करते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, कॉम्बिनेशंस, इनको स्टडी करते हुए एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा. नाउ मूव टू द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. As entrepreneurship development is giving much contribution in economic development as well as increase in employment opportunities. The scope of entrepreneurship development can be made clear by some of the facts given in the slide. The first point is establishment of business. Developing countries कब develop होंगी? जब sufficient number of business establish होंगे. And entrepreneurship is required or necessary for the establishment of business. So entrepreneurship is helpful in economic development of a country. Move to the next point, that is innovation. In order to increase the pace of economic development of a country or to maintain it, innovation is very much essential. So entrepreneurship is required for economic development of a country. Move to the next point, that is availability of employment opportunities. जैसे जैसे बिजनेस इंक्रीज होंगे एस्टैब्लिश होना, वैसे वैसे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल होंगी इकोनॉमी में. Consequently, the unemployment get reduced and the economic development of the country take place. Move to the next point, that is development of backward areas. As entrepreneurship is also needed for the development of backward areas, the people living in backward areas are not much educated, as a result of which they do not get good opportunities of employment. But with the help of entrepreneurship ये सब कुछ possible होगा कि अपना वो living of standard increase कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, ऐसे ही उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी अगर बिजनेस एस्टैब्लिश होगा, और जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो जाएगा. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंटरप्रेन्योरशिप
establish new businesses and arrange as well as control the essential resources. कौन से resources? Money, machine, land, human resource etc. required for their activities. अब वो कंट्रोल में होंगे, उनको अरेंज किया जाएगा, तो full utilization of resources become possible due to entrepreneurship development. Move to the next point, that is development of the spirit of daring. जब एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मुझे कुछ न्यू करना है तो उसको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. अब वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा तो उसके अंदर एक फीलिंग आएगी डेयरिंग वाली, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. So when an entrepreneur think of doing something new, then he has to perform a number of functions for it. He develops a feeling of daring by performing these functions, which is very much essential and important in this competitive age. So it is helpful in developing the spirit of daring. Move to the next point, that is development of infrastructure. जैसे न्यू बिजनेस यूनिट डेवलप होंगे वैसे ही न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी. सो द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री. So at last it can be concluded that through the process of entrepreneurship, new business unit is established under the situation of risk and uncertainty with an objective of earning profit. It performs the function of utilizing various resources and managing the production with result into proper utilization of resources, and an effort is made to do something new for which an analysis of business environment as well as financial resources is made. Under it, business is established on the basis of skill, knowledge, experience, logic, etc. of a person, which encourages innovation. Thanks for watching video. If you like the video, please share, like and subscribe our channel and press the bell icon for more video updates. Thank you.